Okay, so we had actually finished up with the central tendency, that is mean, median, and mode. And now we are starting up with the variance and standard deviation. That's actually the last part of it. I thought it would be covered in the previous recording, but unfortunately it didn't. Anyways, no problem. Okay. So as I was telling you that my mean, median, mode are ways to find out the central value. जो हम एक एवरेज निकालने की कोशिश करें. ठीक है, just to repeat again, mean I'm going to use when you have data in a basic bracket. You don't have too much of high and too much of low values. It's around a particular set of values only. Because if you have 2, 3 values which are too huge, variating from my basic set, average बिगड़ जाएगा. ठीक है. So जहां पे वो चीज हो रहा है, you will not go for mean, you will go for the median. And when you have too many high peaks in the data, too many high values, in that case, you will go for mode. Too many of them, then you will go for mode. Okay? So all these three are to measure the central value. And basically, हम लोग average या mean use करते हैं. We've seen the process of doing it also, as well as we've seen the functions which are available in Python to do it. They're by the name of the, I mean, concept itself. Mean के लिए mean function ही है. So there's no difficulty. It's not difficult at all. Now moving on to the variation. अब वेरिएशन हमें ये बताएगा कि ये अगर सेंट्रल वैल्यू है तो कितना वेरिएट कर रहा है. हाउ मच इज द वेरिएंस, है ना, कितना डिस्पर्स कर रहा है वो. इसलिए हम बोलते हैं वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आर द मेजर्स ऑफ dispersion from the central value. How much is it variating from the central value? Okay. Now, the process of calculating also is very easy. Again, you must be doing it in economics, I'm not sure, or you've already done it. You have a set of values, you calculated the mean. Average निकाला आपने, इस भी तरीके से आप निकालना चाहते हो. That average is ready with it. Now to calculate the variance, so आप क्या calculate कर रहे हैं कि वो mean से कितना ऊपर नीचे है ना. So आपने उसको 16 is my average value coming here, central value coming here. I will not use the word average because basically हम average mean के लिए use करते हैं. So whether it's a median value or mode value, we'll call it the central value. It's a more generic term. So 16 is my central value. Now central value से कितना कितना वेरिएट कर रहा है. तो आपने 16 इसको माइनस किया बेसिकली. 5 minus 16 minus 11, 10 minus 16 minus 6, 15 minus 16 minus 1, 20 minus 16 4, 30 minus 16 14. उसका स्क्वायर निकाला. ठीक है, उससे एब्सोल्यूट भी हो जाता है वो वैल्यू. और फिर उसको सम किया. राइट. उसके बाद उसका मीन निकाला 74. So 74 is actually the variance value. This value is my variance. So calculate the difference from the mean, then square them and find the average. Average के लिए मुझे sum करके divide by the number of observations करना है. When I get that, that is my variance value, और इसका square root is my standard deviation. ठीक है, simple and straight. Okay, so these are the two categories of dispersion, variance and standard deviation, and this is the way we calculate it. And in simple terms, these are the direct ways of calculating your central tendency values and variance and dispersion values, I should say, using your code. So आपको क्या करना है? Import statistics. This is the library. Now you will start learning about this. We have not really done extra libraries. हम लोग basic Python जो install किया उसी को use किया. Now Python is popular because it has got a huge library of set of libraries available. पूरा का पूरा आप एक साथ
यूज नहीं करते हैं. Whenever you need it, at times certain things have to be installed also, or certain things are there, you have to import it before using it. Actually क्या होता है, these libraries have functions, huge set of functions. जैसे मैंने बोला ना, लिस्ट के functions हमने पढ़े. So functions are ready-made code. So इस particular हर library में, like here we're talking about statistics, you have a math library also. Multiple libraries are there, many of them. So this library they have created all the statistics related functions, उन्होंने बनाया और उसको इस पर्टिकुलर लाइब्रेरी के अंदर डाल दिया, कंबाइन कर दिया सारे फंक्शंस को. So all the functions related to statistics are here. So if you need it, you import that entire library and then use it. Because वो सारे कोड आपके इसके साथ ज्वाइन हो जाएंगे कंपाइल होता टाइम, जब कोड कंपाइल होगा आपका पूरा कोड, तो नंबर ऑफ लाइन्स विल इंक्रीज ऑफ द कोड. ठीक है, बड़ा बन जाएगा कोड बेसिकली. सो इन दैट केस क्या हो जाता है कि अगर आपको नहीं चाहिए तो आप अननेसेसरली सारा का सारा डेटा तो नहीं डाल के रखोगे, सारे फंक्शन यूज डाल के रखोगे अपने कोड के अंदर. Unless you are using it, you will not put it. Unnecessarily, you are making the code bigger. So keeping that idea in mind, they have segregated. This is square root है, cube root है. All these kind of things are available in a library, which is your math library. Right. Now there are other libraries which are, these are like installed automatically. हमको सिर्फ import करना है. Now we learn about certain other libraries also, like matplotlib and pandas and numpy. ये थोड़े और हेवी डोज लाइब्रेरीज है जिनको कि इंस्टॉल करना पड़ता है. पाइथन इंस्टॉल करने के बाद आपको उसको इंस्टॉल करना पड़ता है, फिर इंपोर्ट करोगे और फिर यूज करोगे. ठीक है. तो दिस इज अ स्टैटिस्टिक्स लाइब्रेरी एंड इन दैट वी हैव दीज फंक्शंस. अब इसको यूज कैसे करना है? When we write import statistics as S, why do I write this and whether it is compulsory or not? It is not compulsory to write as S. It is just an alias name I'm giving. Because I'm going to use this name to call my function. Okay. Use के लिए. This name is big enough. I want a shorter name for it. Okay. So that is why I'm giving this alias name. So as करके I actually added alias name to it. So you can see here, to call the function mean, I'm writing s dot mean. Right. So that is what I'm going to do. I'm going to import my library, concern library, give it an alias name in my program, and then use it. So what we have done here is that we have taken a set of height of people, maybe your class students or somebody, some set of people we have taken the height values. एक पूरे वैल्यू सेट का मैंने मीन निकाला, मोड निकाला, मीडियन निकाला, वेरिएंस निकाला, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला. Very straight to use. Now that you've learned how to use the list functions, you will be confident and comfortable of using this method. You're calling this function from the statistic library. So that is why the alias name or the statistics as a name can be used here. No problem. Statistics dot name of the function. जिसको आप कॉल कर रहे हो. Half circle brackets are always important for function because there I give the input. मीन निकालो किसका. ठीक है. So function को input will go and this input is your this set of information. So जो ये list of information है मेरा height, that is going as an input. For my mean also, for my mode also, for my median also, for my variance also, for my standard deviation also. So you will be able to calculate it. I've given you the output too. You can try it out with any set of information. And of course, when we need it in our projects and all, we'll be using it. Okay. Am I clear with this particular part? Right? Last part now talks about the pre-processing involved. Now I have understood the data as such. We know that how exactly my data is collected, from where all sources we have done. We have done the categories of data. How do I understand whether it's a nominal data, ordinal data? क्या उसके फीचर्स हैं, जिसको क्लासिफाई कैसे करेंगे, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव, वो सब हमने कर लिया. फिर हमने डेटा में से सेंट्रल वैल्यू निकालने का तरीका सीख लिया.
वेरिएशन सीख लिया, ये सब हमने कर लिया. Now the pre-processing involved before I hand over the data to my machine learning process. So I'm back to where I'm going to use my data. ठीक है. बट उसको भी देने से पहले अगेन आफ्टर ये सब कुछ आप टू डू ऑन द डेटा, देन ओनली आई विल बी एबल टू hand over the data to them. Okay. So that involves a set of steps wherein you have data cleaning, then transforming the data, reducing the data, integrating and normalizing the data, and feature selection. So all these are steps of my pre-processing. Again, you may process the data like this first and then give it to your machine. Or you may design a system yourself who will do this for you. है ना? We have functions available in Python which will do this work for me also. So let's see how exactly these steps are done and what exactly they actually mean. Data cleaning, you're cleaning the data. सफाई कर रहे हो, है ना? सफाई में तुम क्या क्या करोगे? From the entire data set, you see which all datas are missing. I'll show you this, what exactly they mean by the missing data. When you have huge set of data, 50,000 columns, 50,000 rows of information, huge set of data, अलग अलग कंट्रीज का है सपोजिंगली, कोई भी हमने डेटा डाउनलोड करा कैगल से या कहीं से डेटा सेट, या हम खुद क्रिएट कर रहे हैं, बहुत दिनों का डेटा है, तो वहां पे कुछ डेटा हो सकता है मिसिंग हो, नहीं है वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास. ठीक है. सो यू कैन नॉट गिव द एम्प्टी वैल्यूज टू द मशीन. उससे सारा सिस्टम आपका कैलकुलेशन प्रॉब्लम हो जाएगा, बिगड़ जाएगा. आप ब्लैंक नहीं दे सकते उस चीज को. आइदर वी से द वेरियस स्ट्रैटेजीज आर इन्वॉल्व मिसिंग डेटा को. अगर उसमें मेजोरिटी डेटा मिसिंग है तो आप उस डेटा को यूज ही नहीं कर सकते हो, है ना? तो आपको देखना पड़ेगा पहले कि वो आपका डेटा किस फॉर्मेट में है, कितना मिसिंग है डेटा आपका, एंड देन व्हाट कैन यू डू अबाउट इट. One, what you can do is that you delete those rows and columns which has missing data. ऐसा रो जिसमें लाइक कनाडा इज अ कंट्री, बहुत सारे कंट्रीज का इन्फॉर्मेशन है मेरे पास इन टर्म्स ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स. उसमें से कनाडा एक ऐसा कंट्री है जिसका इन्फॉर्मेशन ऑलमोस्ट सारा ही मिसिंग है, या 40% ऑफ इट इज नॉट देयर. तो यू मे डिलीट दैट कंट्री. ठीक है. यू हैव अबाउट 50 कंट्रीज का इन्फॉर्मेशन, उसमें से एक कंट्री का इन्फॉर्मेशन आपके पास इनकम्प्लीट है. यू रियली डोंट वांट टू यूज दैट, कीप इट. सो डिलीट. Right, so this is one strategy that you delete that row or delete that column जो information आपके पास completely नहीं है. Or at times we put a estimate, right? आपके पास बाकी सारा इन्फॉर्मेशन है तो वहां से एक एस्टिमेशन निकाल के, दूसरे कंट्रीज का डेटा देख के वहां से एक एस्टिमेशन निकाल के, यू रिप्लेस दोज मिसिंग वैल्यूज विद सम डेटा. ओके. एंड यू मे यूज सर्टन एल्गोरिथम्स आल्सो कि पूरा डेटा वो निकाल देखे, चेक करे, एनालाइज करे, उसमें से कोई कैलकुलेशन निकाले, एवरेज निकाले, मीन निकाले, और जहां जहां पे डेटा मिसिंग है वहां पे वो मीन को रिप्लेस कर दे. That also can be done. So various mechanisms are there to handle that thing. But missing data रखते हुए you will not give the data to your system. ठीक है. Then there are outliers. Again, this term can be used in the exam. What are outliers? Outliers is that certain data points जो कि एक ओवरऑल डेटा से बहुत बाहर निकल गए. ना इन द ग्राफ ऑल्सो वी सी स्कैटर डेटा में हम लोग कभी कभी देखते हैं मेजरली डेटा इज सराउंडेड अराउंड दिस एरिया ओनली. ठीक है. उसमें एक ह्यूज एरिया में भी, बट फ्यू पॉइंट्स आर लाइक वेरी फार ऑफ. उन पॉइंटर्स को हम लोग आउटलायर्स कहते हैं, या उस डेटा वैल्यूज को. जैसे बाकी डेटा आपका 10 to 40 के बीच में वेरी कर रहा है. 10 to 40 also a big range. Could be that many of the elements are more towards 10, more towards 40. Those things can be there, but it's in the range of 10 to 40 only, major. But certain data information values in that category, you have 500. 500 और 600 के बीच में है एक दो पॉइंटर्स. ठीक है. सो यू हैव टू डील विद दैट डेटा. यू वांट टू कीप इट, तो उसकी वजह से आपका एवरेज बिगड़ेगा. यू हैव अदर प्रॉब्लम्स. यू वांट टू कीप दैट डेटा और नॉट, दैट विल गिव अ डिफरेंट पिक्चर. Depends. You want to keep it, it's your wish. Otherwise, you may remove that data. You can identify those outliers and remove. But all that depends upon where are you going to use that data. Okay. Whether you need to remove it or not, whether you need to keep it or not.
Whether you need to deal with it or not depends upon your situation, but you have to take care of it. You have to find out those outliers and analyze. That's your work. That's your job. Inconsistent. Some data, obviously डेटा को आप टाइप करके डाल रहे हो, somebody is typing that for you, so वहां पे there could be errors in type, data type in your typing of information. ओके, सो कहीं पे वो सेम इंफॉर्मेशन ही 5 है, कहीं पे उसी का वैल्यू 6 हो गया है. इट शुड हैव बीन 6 तो हो ही नहीं सकता. इट कैन बी आइदर 5, 10, 15, 20. सो उस तरह के डेटा को फाइंड आउट करो. यू हैव टू फाइंड आउट दैट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन ऑल्सो कि वो इनकंसिस्टेंट है, हो ही नहीं सकता. कहीं पे 5 हो गया, कहीं पे 7 हो गया, कहीं पे 8 हो गया, बट इट हैज टू बी 5 ओनली, और 5, 10, 15 ओनली. इनकरेक्ट डेटा बेसिकली. इनकरेक्ट इनकंसिस्टेंट डेटा को भी आप देखो, यू करेक्ट इट और यू टेक इट आउट. डुप्लीकेशन इज देयर, अननेसेसरली टू मच ऑफ डुप्लीकेशन. वैसे ही इतना डेटा, उसमें से डुप्लीकेशन भी है, सो डोंट कीप द डुप्लीकेट डेटा. So all these information, all this analyzing after you collect the data is to be done, and accordingly the data is to be cleaned. Outliers remove कर दिए, missing values को handle कर लिया, inconsistent data को handle कर लिया, duplicate data को हटा दिया. My data set is ready. डेटा को ट्रांसफॉर्म किया, कहीं कहीं पे आई नीड टू कन्वर्ट द डेटा इनटू अ न्यूमेरिक वैल्यू. हम उसको टेक्स्ट फॉर्म में नहीं रख सकते. Like some information, one of the columns in the data talks about um okay, this category only, like married, unmarried, divorced. अब मैं उसको मैरिड, MARRID इस फॉर्म में नहीं रख सकते. आई वांट इट इन द न्यूमेरिक फॉर्मेट, सो आई मे कन्वर्ट इट इनटू कि मैरिड है तो 0 कर दो, अनमैरिड है तो 1 कर दो, डिवोर्स है तो 2 कर दो. ठीक है, सो यू मे ट्रांसफॉर्म दैट डेटा कि टेक्स्ट से मुझे न्यूमेरिकल फॉर्मेट में करना है, बिकॉज आई वांट टू रिप्रेजेंट इट और काउंट इट और समथिंग. सो आई वांट टू डू इट इन दैट पर्टिकुलर format. Depends upon again your need. All this is depending upon your need. This is an interesting concept, data reduction, which is actually talk about dimensionality reduction. Now, dimensionality reduction is basically dimensions. हम यहाँ पे बोल रहे हैं 3D, 2D, 1D. Okay. Now, I have a picture of I have a ball in my hand. Now, that's a three-dimensional thing. Okay. Now, I cannot keep that three-dimensional data for me. मुझे कैलकुलेशन पर्पस के लिए 2D फॉर्मेट में चाहिए या 1D फॉर्मेट में चाहिए. सो यू विल हैव टू रिड्यूस द डेटा, उसके फीचर्स रिड्यूस करके उसको 2D फॉर्मेट में. जेड एक्सेस का इंफॉर्मेशन हटा दो, कीप एक्स एंड वाई, सो यू विल हैव 2D इंफॉर्मेशन, और कीप ओनली एक्स, यू विल हैव अ 1D इंफॉर्मेशन. सो इस डायमेंशनैलिटी रिडक्शन को हम लोग यहाँ पे डेटा रिडक्शन बोल रहे हैं, कि फीचर्स कम करेंगे उसका, जिससे कि हमारा वो डेटा रिड्यूस हो जाएगा. आई डोंट वांट टू कीप एक्स एक्सिस डेटा आल्सो, वाई एक्सिस डेटा आल्सो, जेड एक्सिस डेटा आल्सो. आपने जेड हटा दिया तो उसका डायमेंशन ही रिड्यूस हो गया, है ना. सो दैट आल्सो कैन बी डन इफ यू वांट टू. डेटा को नॉर्मलाइज किया, आपने डेटा को वेरियस सोर्सेस से कलेक्ट किया है, वो बहुत वेरीड डेटा है, तो आप उस डेटा को मर्ज करो. कुछ कुछ इंफॉर्मेशन को सेग्रीगेट करके अलग कर दो, कुछ इंफॉर्मेशन को जोड़ दो साथ में, पुट इट टुगेदर. फाइन. सो make your data look more logical. Basically, that is what we are trying to do. Then one more thing, in I think a very important feature, that is बहुत सारे features दिए उसने. You know, when we actually start working with the project also, we'll see that multiple things are there. एक set के बारे में, like, okay, your friend. Fine, let me keep it very simple. You have your friend. Now that friend has, उसका डेटा अगर आप एक जगह पे नोट कराउन करते हो, तो that can be huge. One, it could be his पर्सनल फीचर्स, उसका, उसके आईज कैसे है, नोज कैसे है, ईयर्स कैसे है, बाल कैसे है, पर्सनल फीचर्स. ओके, वन सेट ऑफ डेटा. सेकंड कुड बी हिज academic performances. You understand it very well. Third could be his qualification. Fourth could be his maternal information. उसके मम्मा के बारे में सब कुछ, मम्मा फादर कौन थे, वो कहाँ रहते थे, व्हाट शी हैज डन, व्हाट इज हर क्वालिफिकेशन, उसके फैमिली में कौन है, सब कुछ. फादर, पैटर्नल इंफॉर्मेशन, his ancestral information overall.
राइट, लॉट ऑफ थिंग्स। एक इंसान के बारे में कितना डेटा कलेक्ट कर सकते हैं हम लोग। ठीक है। सो नाउ डू वी एक्चुअली नीड ऑल दैट? है ना? सो यू एक्ट, आपका जो टारगेट है, आपको ये चीज यू हैव टू सी, ओके यू हैव अ सेट ऑफ 4 people एंड यू हैव टू चूज अ फ्रेंड फॉर योरसेल्फ। सपोजिंगली आई एम गिविंग यू दैट एग्जांपल। फाइन। तो आप उन चारों लोगों के बारे में फीचर्स कलेक्ट करोगे, सब कुछ, उसके बिहेवियर के बारे में, उसका, उसके मार्क्स के बारे में, उसके फीचर्स के बारे में, उसके फैमिली के बारे में, एंड देन आई वांट टू चूज बेस्ट फ्रेंड, सपोजिंगली आई एम सेइंग। फाइन। उसका डीलिंग विद अदर पीपल, दैट्स आल्सो केस स्टडीज है वैसे आपके पास कि भाई उसने इस केस में ऐसा करा, इस केस में ऐसा बिहेव किया, उस केस में ऐसा बिहेव किया। So you have all sorts of information about those 4 people. Now, what exactly you want to use for your target? आपका टारगेट है कि आपको चूज करना है वन ऑफ दोज 4 people एज अ फ्रेंड, एज अ मैनेजर, एज अ एम्प्लॉई, एज वॉट एवर, एज अ मेड, कुछ भी। सो आपको उसमें से कौन कौन से फीचर्स को इम्पोर्टेंस देना है? आपको सब कुछ नहीं चाहिए, है ना? If you are trying to keep a maid at your place, you will try to actually see her criminal background also. That's important. In certain other cases, it might not be. ठीक है, वो criminal है तो है, something like that. Right. So according to your target, what you are targeting at, what features you want to keep, you'll keep those features and leave the rest. Remove the rest of them. Right. So finally, we have to talk in terms of what all we need for our work. We keep those information, we keep those data, and the rest of the things we delete. Right. And that we give it to my system. So this is my pre-prep of the data, which needs to be done before I hand it over to my machine. You have to cleanse the data. You have to transform it if required. These are all if required. You have to reduce the data if required. You have to normalize it. You have to do feature selection from that if required. अगर बहुत ज़्यादा नहीं है, लिमिटेड ही आपने उठाया, whatever you wanted, so you can keep that much. You don't need to change it. Okay. So all these needs to be done before we hand over the data to my machine to work. And these things are significant when you talk about a system who is going to actually help you make decisions. अगर आपका इनपुट ही गलत है, इनपुट में इनकंसिस्टेंसीज है, गलत है, आपने चेक ही नहीं करा डेटा देने से पहले उसको, सो देन योर आउटपुट और योर डिसीजंस विल बी रॉन्ग। है ना? तो हम वो नहीं चाहते। वी वांट आवर एआई मशीन्स टू डू द करेक्ट थिंग। दैट इज व्हाई द डेटा व्हाट यू प्रोवाइडेड हैज टू बी करेक्टली formatted and integrated and normalized, transformed, cleansed, all these things be done. Okay, so all this is about your data literacy, knowing your data better, starting from the various categories, the various types, the sources, calculations, and finally pre-processing. Okay, that's it. Go through it, see the things. I've tried to pick up the pointers which will help you identify the key points easily, note them down, and then work out on the examples given in the sorry, given in your booklet, CBSE booklet. Okay, and see whether you can do the MCQs or not. If you are able to do the MCQs, that means you understand the topic well. Okay? Okay then. Let's stop here and I'll wait for your queries. Fine. Okay.